Good afternoon, everyone. Today we will see our exercise number 1.1. In previous lecture, we seen about some introductory part. Now we start our exercise number that is 1.1. Okay, question number first. So what is question number first? In the number 94,534, how many times is the place value of the digit 4 on the right to that of the left? Right to that of the left. Okay. So new word that is place value. This is place value. What is meant by place value or how to find out place value? Okay. First, I will explain this meaning of this concept or place value. Yes. For example, we can take here 24. Here we can take 24. Okay. So like that, we know that the place value or value of that place. What is the value of that place? This is 10 place. This is unit place. Value of that place, like that, we can write 10 2 into 10. Okay, means we can multiply this face value into 10. Face value means as it is number, so 2 into 10, that is the place value. So place value for this digit, that is 10 into 2. Okay, then plus what is this place value of this 4? That is unit place, and we can multiply by 1. Okay, so finally here we can write like that, that is 2 into 10, that is 20, and plus 4 into 1, that is 4. Means the place value of these two in this number, that is 20. Okay, means we can take here 0, so value of this 120, and place value of this 4 is 4, so 20 plus 4 total, that is 24. Okay, like that we can take one more example, or we can take this one example. What is number 94534? Okay, this is our number. So find out the place value of this 4, this 1 4. Okay, so what is the place value of this 1 4? So like that we can write place value of this 1 4, that is 4. How many digits after 4? 1 2 3. Means like that we can take 3 zeros. Means this is the place value or value of that place, that is 4,000. Okay, and what is the value of that place? Means 4. So that is unit place. So like that we can write only 4. Only 4 because it is on the unit place. Okay, so this is the place value. Okay, so what is our question? In the number that is 94,534, how many times is the place value of the digit 4 on the right to that of the left? Okay, means here 2 4 is given, so 4 on the 3 digit. This is most important. 4 on the right to that of the left. First right and then left. Okay, means what is right place value? Right, this is right digit. We can measure like that. This is right 1 2 3 4. This is a right digit that side. Okay, then this one left. This is left digit. Okay, this is our left digit. Okay, so like that we can use here this concept. Means first one we get, this is right digit. This is our right side. This is right side. Okay, and this is our left side. Left side. We can mention like that direction. Okay, this is our right side and this is our left side. Okay, so what is our right 4? This is 4, and value of that 4 is 4. Means first one value of 4 on right side, means like that we can write here 4. Okay, 2d means divide, so 4 by left. Yes, to that of the left. So what is left 4? Value of that left 4, this is 4,000. So like that we can write here 4,000. Okay, so what is final answer? We can cut this 4 ones are 4 ones are. What is remaining? 1 by 1,000. 1 by 1,000. Okay, means our final answer, that is option number 2 is correct. What is our final answer? Option number 2. Okay, so this is the concept of place value. Here place value of 4 is 4,000. What is place value of 9? For example, place value of 9, like that we can take, that is 9. How many zeros? 1 2 3 4. That is 3 zeros. Okay, means 90,000 is the place value of 9. Means value of that place. Value of that place. So this is the 90,000. And next concept, face value. FASFCE. Face value. What is meant by face value? Okay, फेस वैल्यू मीन्स एज इट इज नंबर. ओके, सो जो भी आपको आगे नंबर दिख रहा है, फॉर एग्जांपल 9 का फेस वैल्यू क्या है? 9 है. जो भी आपको दिख रहा है वही उसका क्या रहता है? फेस वैल्यू रहता है. सो व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 9? दैट इज 9. व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 4? 4. व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 5? 5. व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 3? 3. and what is the face value of 4? That is 4. Okay, that is face value. Okay, and what is the place value of 9?
90,000. What is the place value of 4? 44,000. What is the place value of 5? 500. What is the place value of 3? 30. And what is the place value of 4? That is the unit place 4 only. Okay. So this is the concept. Okay. So what is our final answer? Like that we can use this one statement. 4 on the right to that of the left. Okay. So first take the value of right 4 digit. So right 4 digit value, that is 4 only. Left 4 digit value, that is 4,000. To that of the left. So like that we can write this is 4 and this is divided by 4,000. So 4 ones are 4, 4 ones are 4. We get remaining 1 by 1,000. So answer number second be the correct option. Answer number second be the correct option. Okay. So this is the concept. Then next question number second. So what is question number second? Yes, given that question 3 plus 2p and 2 plus 3q are the digits. Means these digits, these given equations are digit. Okay, are the digits in the 1000 and 10 places respectively. This is most important word. ये सबसे important रहेगा, इससे आपका question solve होता है. 1010 places respectively of the number, this one number 84527. Okay, means 84,527. Find the value of P and Q. Find the value of P and Q. Okay, so what is question? This digit is the digits, this equation is the digit which is included in that number. Means ये जो digit दिया है आपको वो इसमें है, बट ऐसे कौन से P और Q के नंबर हम पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो आपको इसमें वो 1000 प्लेस मिलेगा. तो 1000 प्लेस कौन सा है? 4 है, 4 मिलना है. एक कौन सा ऐसा नंबर पुट करके आपको ये ओके ऐसा कौन सा नंबर है कि वो आपको 1000 प्लेस देगा? 1000 प्लेस बोले तो 4 मिलना है. ओके, एंड नेक्स्ट वन, ऐसा कौन सा एक नंबर है कि वो 10 प्लेस देगा? व्हाट इज 10 प्लेस? दिस इज 2. ओके, मींस इफ यू कैन पुट हियर like that, what is our first digit? This is our respective na, this is our 1000 place. So here we can write 1000 place. There is 1000 place digit. Okay, which one is 1000 place digit? That is 3 plus 2p. Okay, so which value we can put? So we get 4 answer. We get 4 answer means 1000 place value. Okay, so one by one we check here options. If you can put minus 1 on the place of p, so we get 3 plus 2 into minus 1. Yes, here we can write 3 plus 2 into minus 1. So we get 3 plus minus 2, we get 1. So this is not 1000 place value. So again we can check 3 plus 2 into what is p? What is first value? 1. So here we can take 1. So 3 plus 2 into 1, 2. That is 3 plus 2, that is 5. Okay, so 5 is not 5000 place value. This one with the wrong answer. Okay, again we can take so this is example. So given that first digit that is 3 plus 2p and second digit that is 5 plus 3q. So 1000 place digit, this one with 1000 place digit, that is 3 plus 2p. So if you can put p is equal to 1, means by using this options. So if we can put p is equal to 1, so we get 2 plus 2 into 1, that is 2. So 3 plus 2, that is 5. So this is not 1000 place digit. So we can check second option, third option. So here we can put minus 0.5. If you can put minus 0.5, so we get 3 plus 2 into minus 0.5. So we get, yes, minus 0.5 means here we get minus sign, 3 minus 0.5 into 2, meaning of 0.5 means half, meaning of 0.5 is half. We get 1. So we get 3 minus 1 is 2. Okay, so this is not 1000 place digits. So we can check next option. What is last option? If you can put here 3 plus 2 into value of p 0.5. So like that we can write 3 plus 2 into what is meaning of 0.5? That is 1 by 2. 1 by 2 means 0.5. So 2 to get cancelled, remaining 1. So 3 plus 1 is equal to 4. So this is the 1000 place. Okay, means this fourth option is correct. But check second digit also. What is second digit? 10 plus digits. So 10 plus digit. 10 plus digit. What is 10 plus? 5 plus 3q. So here we can put q as a minus 1. Here we can take q as a minus 1. So that is 5 plus 3 into minus 1.
Okay, so what is final? 5 plus minus 1 into 3, that is minus 3. So 5 minus 3, we get 2, and 2 is a 10 plus digit. Okay, means correct option is 4. Okay, so this is the final answer of question number second. Okay, similarly, question number second. Yes, what is question? What will be the difference between the place value of the digits at the tens and unit places of a number formed by the addition of the greatest 6-digit number and the smallest 3-digit number? Okay, so what is first statement? By the first, find out the number formed by the addition of greatest 6-digit number and the smallest 6-digit number. Okay, means first to find out the number. So okay, how to find addition of greatest 6-digit number? What is greatest 6-digit number? We know that if we can take like that, that is 9 9 9 9 9 6 times. This is greatest 6-digit number. Okay, क्योंकि 9 के greatest number nahi hai. Okay, so this is our greatest 6-digit number. What is smallest 6-digit number? So like that we can take smallest, means here we can take 1 0 0. Okay, so this is the smallest 6-digit number. Okay, उसके सवाल क्या है? 99, that is 2-digit number. तो 100 क्या है आपका? Smallest 3-digit number है. Okay, so addition of these two numbers, so we get number. So addition of these two, that is 9 as it is, this one 9 as it is, then 9 plus 1 10, 1 carry, then again 10, 1 carry, again 10, 1 carry, 0 here 1. Okay, so we get this is final number. Okay, so this is our final number, means 10 lakh 99. This number is 10 lakh 99. This is our final number. Then by using condition, what will be the difference between the place values of the digit at the 10th place? At the 10th place, so find out 10th place value. So this is our 10th place, that is 90. Okay, then next one, unit place of the number. What is unit place value? This is 9, this is 9. So find out the difference of this unit place and 10th place and unit place. So here difference means minus sign. So 90 minus 9, we get difference 82. Sorry, 81. What is difference? 81. Okay, so 90 minus 9, 81 आता है. Okay, so what is our correct option? Option number first is the correct option. Okay, so this is the best way to solve this example. इस तरह से आप ये टाइप के एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं. ओके, यही एग्जाम्पल आएगा, थोड़ा सा मॉडल चेंज होगा, तो आपको ये समझना है. मीन्स फर्स्ट टू फाइंड आउट द नंबर, दिस वन कंडीशन, एंड देन find out 10th place and unit place, and then subtract this place. So we get final answer. Okay, so next question, question number 4. What is question? What will be the sum of adding all possible 3-digit number formed by 9 using each of the digits only once? Using each of the digits only once. Okay, this is our question. अब ये क्वेश्चन है 4 6 9 यूज करके आपको 3-digit नंबर देखना है. ओके, और उनका एडिशन करना है. सो प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्ट है, आपको सॉल्व करना है, ट्रिक्स वाइज सॉल्व करना है. ओके, ट्रिक्स बताता हूँ. फर्स्ट वन जो कि आपके बुक में भी ऑलरेडी दिया है, 4 6 9 डिजिट यूज करके आपको 3-digit नंबर का एडिशन करना है. ओके, सो जैसे कि आपका ये 3 प्लस एस डिजिट है. ओके, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नंबर है आपका 4 6 9. ओके, इट इज नॉट फिक्स्ड. ये कौन सा भी नंबर हो सकता है 4 6 9. तो इसका ये तो प्लेस पहले ही बिजी रहेगा, ये तो प्लेस उसका पहले ही रहेगा. 9 का यूनिट प्लेस है तो ये तो पहले ही रहेगा. 6 का 10 प्लेस है तो ये तो पहले ही रहेगा. ओके, तो 6 को कहा मैं चेंज कर सकता हूँ? एक तो 10 100 प्लेस पे चेंज कर सकता हूँ, अदरवाइज यूनिट प्लेस पे कर सकता हूँ. ओके, 9 को मैं कहा can change at the 100 place or 10 place. Okay, then again we can change this one 4 digit at unit place or 10 place. Okay, means here we can change place of every digit only 2 times. Okay, means 2 बारी एक नंबर का हम प्लेस चेंज कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक नंबर आपको मिलेगा 4 6 9, तो ये 100 प्लेस पे, तो 10 प्लेस पे यूनिट प्लेस पे जाएगा. जो नंबर यूनिट प्लेस पे वो 10 प्लेस पे 100 प्लेस पे जाएगा. जो 10 प्लेस पे ऑलरेडी है वो यूनिट प्लेस और 100 प्लेस पे जा सकता है. ओके, मींस 2 टाइम्स प्लेस उसका चेंज हो रहा है. ये लॉजिक आपको देखना है. ओके, मींस हियर वी कैन राइट एवरी डिजिट चेंज बाय ओनली 2 टाइम्स. सो हियर वी कैन राइट एवरी डिजिट
change their place, change their places two times. How many times? Two times. Okay. First, here we can find out the value of by using this two times. Okay. So what is tricks for this one? Like that we can write. How many times change this one digits place? That is two. Okay. Addition of these digits, that is 4 plus 6 plus 9. ओके जो भी एडिशन रहेगा वो पहले डिजिट का एडिशन करेंगे, टू टाइम्स चेंज कर रहा है तो टू टाइम्स लिखेंगे. ओके तो क्या मिल रहा है यहाँ पे फाइनल? सो वी गेट 2 इंटू एडिशन ऑफ दिस 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 9 दैट इज 19. सो वी गेट 38. दिस इज द सम ऑफ डिजिट. ओके और वो क्या कर रहा है? टू टाइम्स प्लेस चेंज कर रहा है, ये इसका वैल्यू है. ओके बट हमने अभी कंसीडर किया क्या, समझो ये यूनिट प्लेस पे ये 100 प्लेस पे गया तो उसका वैल्यू क्या आएगा, या वो नंबर समझो आपका 10 प्लेस पे गया तो उसका वैल्यू क्या आएगा, वो हमने नहीं निकाला है. ओके तो वो हमें निकालना है. तो फाइंड आउट द प्लेस वैल्यू ऑफ दिस नंबर. सो प्लेस वैल्यू ऑफ 38 on 100 place, 100, 10 and unit place. Okay so 38, like first we can find here 38 value on 100 place, so like we can write 38 100. Okay then 10 place value, that is 38 0 1 0 only in 10 place, and unit place as it is this one value 38. Okay so what is our question? What will be the sum of adding all possible 3-digit number? ये ध्यान में रखना है प्रोसेस. इस टाइप के हर एक एग्जांपल आपको सॉल्व करना है. वो कितना भी डिजिट रहने दो, समझो यहाँ पे 4 डिजिट आए तो उस तरह से वो कितना प्लेसेस चेंज करेगा? 3 प्लेसेस चेंज करेगा. 5 आए तो 4 प्लेसेस चेंज करेगा. ओके यहाँ पे 3 है तो कितना प्लेसेस रहता है? 2 रहता है. उस तरह से वो सिर्फ कंडीशन चेंज करेगा. ओके सो इनका एडिशन करने हमें एडिशन क्या मिलता है? 0 प्लस 0 0 प्लस 8 8 एज इट इज, then 8 plus 3 11, 8 plus 3 11 plus 1 12, 1 carry, 1 plus 3 4. So what is final answer? 4218. So option number, this is number second, 4218. So this is the final answer. Okay तो आपको एक बार ट्रिक समझ में आए, कैसे सॉल्व करना है समझ में आए, तो कोई भी एग्जांपल इसमें आने तो आप सॉल्व कर सकते हैं. ओके फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम समझो इस तरह से नंबर लेते हैं 6 9 4 या 2 लेते हैं. ओके ये नंबर है तो जस्ट चेंज क्या होगा, यहाँ पे चेंज होगा. ये 2 कितना टाइम्स प्लेस चेंज कर रहा है? 3 टाइम्स चेंज कर सकता है. ओके वो 1000 प्लेस पे जा सकता है, देन 10,000 सॉरी 100 प्लेस पे जा सकता है, 10 प्लेस पे जा सकता है. तो 3 टाइम्स कर रहा है. सो सम ऑफ डिजिट 4 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 2. ओके ये पहले निकालना है, इनका सम निकालना है. जो भी सम आएगा 3 से मल्टीप्लाई करना है एंड देन प्लेसेस वैल्यू, यहाँ पे 1000 प्लेस भी ऐड होगा. ओके तो कुछ भी एग्जांपल आने दो, आप इस तरह से सॉल्व किए तो आपको फाइनल आंसर नंबर फाइंड आउट करने में बहुत डिफिकल्टी है. ओके इस तरह से ये शॉर्टकट ट्रिक से आप सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है सो दिस इज द फाइनल आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 1.2. ओके फर्स्ट आई विल रीड क्वेश्चन. व्हाट इज क्वेश्चन? in the number that is 5 star 4 3 6 star 2, the same place of star. Okay means on the place of this star same digit is occur. Okay so same digit is coming here. So the difference between their places values is, that is a 6,99,930. which digit is in the place of star? Okay so simply we can convert the place value of star. So like that we can write here, we can take number first 5 star 4 3 6 2 6 star then 2. Okay इस तरह से हम नंबर लेंगे. So here we can take first place value of this star. ये स्टार का प्लेस वैल्यू क्या आएगा? ओके हमें क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस बिटवीन दियर प्लेस वैल्यूज. ओके सो here we can take first place value of this star. So here we can take star. Okay here star, how many digits after this star? 1 2 3 4 5 zeros, 5 zeros. Okay similarly place value of this star. Okay so what is the place value of this star? Here we can take star, that is 10 place, so here we can take 1 0. Okay मींस इस स्टार का प्लेस वैल्यू क्या आएगा? स्टार एंड 0, क्योंकि एक ही डिजिट है उसके बाद तो 1 0 आएगा. ओके बट क्वेश्चन में क्या बोला है आपको?
we can same number same digit occur in the place of star. ये सबसे important है, same digit occur on the place of star. तो star के जगह पे हम same number लेंगे, बट कैसे लेंगे, जो भी आपको ऑप्शन में दिया है उस तरह से हम चेक कर सकते हैं. उसमें भी एक ट्रिक्स है, आप ऑप्शन देख सकते हैं, जो भी आपका 10 प्लेस दिख रहा है उसमें डिजिट आ रहा है 3, इसमें डिजिट क्या आ रहा है 3. तो 3 कब आ सकता है, समझो यहाँ पे आपका क्या है 10 कंसीडर करते हैं, 0 बोले तो क्या रहता है 10. तो जब हम 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा 3 मिलेगा. मींस आई थिंक 7, but हम चेक करेंगे it is correct or not. Okay, so like that we can take on the place of star, that is 7. So 7, here how many zeros, 5 zeros. Here we can take 7 0. Okay, subtraction of these numbers, that is 0 minus 0 0, then 0 means 10 minus 7, that is 3, then here remaining 9, here remaining 9, here remaining 9. यहां से कैरी लिए तो यहाँ पे क्या रहेगा 6. So this is our number. So this is 6,99,930. यही नंबर मिल रहा है आपको. तो कौन सा नंबर फिट हो रहा है स्टार की जगह पे 7. So 7 विद द स्टार वैल्यू. दिस इज द अवर फाइनल आंसर. इस तरह से आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा. ओके, उस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज द, आपको क्वेश्चन समझ में आए तो आपका 80% आंसर मिल गए. What is the remainder? क्या निकालना है हमें, रिमाइंडर. ओके, if the face value of the digit at the lakh place is subtracted from the place value of the digit at the lakh place. दोनों places lakh है. In the smallest 6 digit number, form by using all the digit other than 0, 2 and 5. ये डिजिट हमें यूज नहीं करना है, ऐसा हमें 6 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट निकालना है. ओके, सो व्हाट इज स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर बाय विदाउट यूजिंग दिस डिजिट. सो लाइक दैट वी कैन राइट, 0 तो यूज नहीं करना है. स्मॉलेस्ट क्या रहता है, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर 0 0 0 0 0. हाउ मेनी डिजिट, 1 2 3 4 5 6. दिस इज स्मॉलेस्ट. उसके नीचे क्या रहता है, दैट इज 4 digit 5 digit number. Okay, 1 0 0 0 0. ओके, सो 0 से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, एज पर क्वेश्चन 0 से लार्जेस्ट नंबर लेना है, क्योंकि 0 ऑलरेडी क्वेश्चन में है. तो कौन सा नंबर है, 1 है. मींस वी कैन यूज 1 इंस्टेड ऑफ 0. सो लाइक दैट वी कैन राइट नंबर, यही नंबर हम इस तरह से लिखेंगे, 0 की जगह पे हम 1 लेंगे. सो 1 1 1 1 1. दिस इज अवर 6 डिजिट नंबर. सो हाउ मेनी डिजिट इन दैट, 6 डिजिट. ओके, तो इस तरह से आपका स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर आएगा जिसमें 0 नहीं है. ओके, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यस, व्हाट इज द रिमाइंडर. रिमाइंडर निकालना है इफ द फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट एट द लैक प्लेस. मींस फर्स्ट टू फाइंड आउट द फेस वैल्यू ऑफ लैक प्लेस. सो व्हाट इज लैक प्लेस, दिस इज आवर लैक प्लेस. मींस 1 lakh, this is 11,111 like that. Okay, so this is our lakh place. So here we can find lakh place face value. Okay, we know that face value as it is digit. So face value क्या आएगा, वही डिजिट मिलेगा, कौन सा भी नंबर होने दो वही मिलेगा. ओके, बट प्लेस वैल्यू मींस वैल्यू ऑफ दैट प्लेस. सो लाइक दैट वी कैन राइट प्लेस वैल्यू. ओके, सो which digit place value. So here we can write question, if the face value of the digit at the lakh place is subtracted from the place value of the digit at the lakh places. Okay, वहां पे आपको lakh places का ही place value निकालना है. So what is the place value of lakh place? So इसका lakh place का place value क्या मिलेगा, 1. How many zeros, 1 2 3 4 5. So after 1 we get 5 zeros, 5 digits. So that is, this is place value. This is place value. Okay, so according to question, if the face value of the digit at the lakh place is subtracted from, किसमें से subtract करना है, from the place value of the digit at the lakh place in the smallest 6 digit number. Means place value से face value आपको subtract करना है. Okay, so like that we can write, that is, what is place value, this is place value. Okay, means that is 1 lakh
place value. Okay, next one, what is face value? Face value is 1. Subtract करना है. So we know that 0 minus 1 we can take carry. So here we can take carry. So we get here 0. Here we get 9, 9, 9, 9, and this is 10. This is 10. Okay. Then 10 minus 1, 9. Then 9 as it is. This one 9 as it is. This one 9 as it is. This one 9 as it is. Okay. So what is our final answer? 99,999. This is our final answer by using this condition. Okay, so your option number 4 is correct. So this is your correct answer. Okay, so this is fine. Okay, क्वेश्चन कितना भी लेंथली होने दो, आपको क्वेश्चन समझ में आए तो इजी आंसर मिलेगा. ओके, इसलिए बोल रहा हूँ पहले क्वेश्चन समझना है, देन आंसर. So this is the final answer. Okay, now we